क्योंकि आपको experience है of working in Amazon, I wanted to ask you if you could share something about that, and also अगर एक आप detailed roadmap share कर सकते so that the students who are aiming to have a job in Amazon उनको help कर सकें. Hmm. Yeah, sure. Um, I think to get into companies like Amazon, like what really matters is how good you are in your algorithms, right? That is the thing they want. As it is said that JEC is the common route that connects us all. So, sir, how do you remember JEC? Could you share some memorable anecdotes that bring a smile to your face? Yeah, sure. I think it was really an important milestone in many different aspects, like in terms of personal growth, professionally, in terms of learning and making friends in all the way, in all the aspects, right? Um, yeah, I mean, if you want anecdotes, um, I think what I remember is like, I mean, in terms of what I cherish is like, sitting among lunchtime, we'll just go out, grab some lunch, and have fun on the way, and then just rush back to the classrooms because we are always late just after lunch, right? Right. Yeah, that is what I really cherish, those moments. Also, it was like really um, helpful in terms of personal growth. I like made many good friends there. The faculties were very helpful and things like that. Sir, also, I would like to ask you that what is the thing that you love most about our college and you think that other colleges may not be able to offer? Yeah, I think definitely there was this difference which I had seen. I have unfortunately, I have been to multiple institutes, right, two IITs, and now here I'm in Edinburgh. Uh, this is what I also just said that basically this is what I felt that in when you are in JEC, if you really want to do good or if you want to learn something, if you seek for it, people would come from all the way to kind of help you. And that is what I was alluding to when I was saying that. So um, I would just walk into Saurabh sir's door and I was like, okay, this is what I'm trying to do, or this is what I'm thinking. What do you think? And he will give all of his guidance there, right? That is what I felt was is something which is very unique. I'm not sure how it is with you guys, but if that is what I felt, I had not seen in other places, right? And then third year, I was like, okay, that's fine, but I think maybe I should also, do things more seriously. Maybe prepare also for gate and also learn things properly. So then I started getting in touch with Saurabh sir and these, and they helped me. I also made actually at that time me at that is the time when JEC was becoming autonomous. So you will Yes, sir. not believe we didn't had I don't know now what's the situation अभी, but तब तो ऐसा था कि systems ही नहीं है. And I remember Saurabh sir coming and telling, there is this summer now, and then for next exam we don't have a system कि वो राबर जो print होता है exam sign करने के लिए. We don't have that system क्योंकि अभी तक तो वो it used to come from RGPV, and now we actually don't have it because suddenly we are autonomous, and then there are these basic systems which are like not there anymore.
and there is no system, I think, for salary management and things like that. And अभी तक तो वो यूनिवर्सिटी का सिस्टम यूज कर लेते थे तो चल रहा था sort of. And then he was like, okay, why don't you guys build something? Like, it's not key, we are not doing a project, this is not our minor project, major project. But he was like, oh, but you guys are this is what you should be doing, right? So why don't you take that as a side project and just do it? And then I don't know, he was like, just do whatever you can do, sort of. And then I started uh, doing sort of trying to figure out कि वो राबा print कैसे करेंगे, and it has to be in the right format. And they'll just give me an Excel sheet and like, print it in the right format in the PDF so that we can just print it. And everything has to be fine because we don't want कि exam hall में कोई बोल रहा है अरे मेरा roll number तो है ही नहीं इसमें, and you cannot check because it was like too much pressure situation that अगले मंथ से एग्जाम्स चालू है, एंड मेरे भी एग्जाम्स है, इट्स नॉट कि मेरे एग्जाम्स नहीं है, लाइक मेरे भी एग्जाम्स हैं. एंड देन ही इज लाइक, बट वी हैव टू डू दिस बिकॉज अदरवाइज हाउ विल वी प्रिंट इट, एंड इट हैज टू लुक गुड एंड फॉर्मल, राइट? इट कांट बी कि एक्सेल शीट उठा के प्रिंट कर दिया. एंड यू कैनॉट प्रिंट एक्सेल शीट, कितने एक्सेल शीट्स प्रॉपरली करके प्रिंट करोगे, क्योंकि देर लाइक सो मेनी स्टूडेंट्स, सो मेनी ब्रांचेस, every branch has like 4 semesters, 4 parallel sessions, like years going on. तो कितने ही प्रिंट कर लोगे? So then I was doing it, and then I don't know, I was just searching नेट पे बैठ के. मैं कभी कि सौरभ सर के केबिन में जाके, नेट नहीं है तो उसके कंप्यूटर में बैठ के सर्च भी कर रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं, सॉर्ट ऑफ. सो वी वर ऑलमोस्ट देयर, एंड देन ही वाज लाइक, ओके तुम्हारा एक सीनियर है Nitish, why don't you go and talk to him? He was doing something similar for his minor project. He knows .NET. So I thought .NET is good because मुझे .NEट में एक पैकेज मिला which was ready. It was good for PDF creation. अभी तो बहुत easy हो गया है, मतलब. And I was not sure क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब इस जो भी लैंग्वेज में हो जाए तो हो जाए, PHP में हो जाए तो हो जाए, इसमें हो जाए तो हो जाए, जावा में हो जाए तो हो जाए, sort of. तो he was like, तो आई वाज लाइक थोड़ा तो अफ्रेड आल्सो, बट देन आई वेंट देयर एंड आई टोल्ड कि वो सर ने फ़ोन कर रखा था उसको कि ये आएगा. तो आई टोल्ड ऐसा-ऐसा है, दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक. वो पीडीएफ जनरेट तो हो ही नहीं रही है सही से. तो इज़ लाइक, "हो हाँ, ये आई वाज डूइंग, मे बी यू कैन आल्सो ट्राई, लुक एट इट." तो ही वाज आल्सो हेल्पिंग. So that is what I am saying कि everybody was coming from all different places, and people try to help you if you are trying to do something. And ये कल्चर है जेईसी में, एंड आई थिंक दिस वाज वेरी गुड. I was able to do robotics because people came together and like, okay, I have no idea, I just thought this is cool, तो मुझे करना है ये. तो I reached out to people and they were like, हाँ ऐसे करते हैं and we will help you. Somehow I was adding all the tricks, कि वो रोबोट ऐसे 90 डिग्री टर्न आएगा तो क्या करेंगे, sort of. And people were giving suggestion, कि ऐसे कर सकते हैं इसको, sort of. I wanted to ask कि how did you prepare for GATE and also आप अपने अगर experience and journey share कर सके of being in IIT खड़गपुर. हाँ, श्योर. आई थिंक, या आई शुड से कि मुझे तो कुछ आइडिया था ही नहीं कि फर्स्ट आई वांट टू डू गेट. लाइक आई हैड नो आइडिया इन दैट सेंस. I remember third year में somehow I came to know about it कि there is this, and I had friends in CS, in IT. My closest friend was in IT, so I used to hang around with, there is Priyanshu Agrawal. He's still friend. I go meet him. I met him last time I went. He's a very good friend. Um, तो आईटी में आई हैड मेनी गुड फ्रेंड्स. सो आई टॉक टू देम कि ये क्या चल रहा है, मतलब ये करना होता है क्या, ये क्या है, सॉर्ट ऑफ. एंड देन एक दो महीने बाद पता चला कि कोई तो सीनियर था, वो आईआईटी दिल्ली में भी हो गया उसका. तो मतलब अच्छा, ये कुछ तो है, मतलब देयर इज मोर टू बी डन देन जस्ट गेटिंग अ जॉब. तो देन वी स्टार्टेड फाइंडिंग आउट कि क्या एग्ज़ाम है, कैसे कर सकते हैं. तो सो एंड देन आई आल्सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड फिगर्ड आउट दैट कि अभी तो ये करना है, मतलब. एंड देन आई आल्सो टॉक टू सौरभ सर. ही आल्सो टोल्ड थिंग्स कि नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट दैट वी कांट डू इट, सो मेनी सीनियर्स हैव डन इट.
So you should prepare. People have gone to premier institutes, good IITs after this, and they are also doing good. So you can do it. That is the spirit, right? कि just try, you can do it. I mean, हमारे बहुत seniors ने किया है. कोई बड़ी बात नहीं है. If you'll definitely put your mind, तो कर लोगे. You are here because of a reason. I mean, right? This is like a good institute, so it's all possible. So that is how I started uh, preparing for gate. But I actually wrote gate in my third year also, and that was just to test the waters, so to say. कि अपन है कितने पानी में, मतलब अगर अपन बोल रहे हैं कि मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ और मैं यार अच्छे गेट तो इज सपोज टू बी टेक्निकल, तुम टेक्निकल पढ़ रहे हो, यही सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, वही सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, तो अपन को आता कितना है. तो मी, प्रियांशु, एंड वी ऑल यूज टू come together sometimes and see क्या पढ़ रहे हैं क्या, and say we gave gate third year में भी, and we gave it seriously. कि सही में अगर अपन दे रहे होते एग्जाम, तो वेयर डू वी स्टैंड इन दैट एस्पेक्ट, राइट? कि अपन ने तो पूरी मेहनत की, फिर भी अपना हुआ था नहीं, वो होता क्या, इस टाइप से. तो दैट इज हाउ वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. So it's very important. I think it was very helpful for us to test ourselves as frequently as possible. So that is how I prepared mostly. That is the gist of it. That's how I prepared from beginning to the end, being around people who want to actually actually want to do good in that exam, and not just do good in that exam, to be honest. Really learn how to solve things, and then cherish कि अरे यार अब तो यार एक साल पहले तो अपन को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये वाली प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती हैं, ये ओएस की ये प्रॉब्लम है, आता ही नहीं था. अपन ने 2-3 महीने लगाए, पढ़ पढ़ के वो ड्रैगन वाली बुक खरीद ली ओएस की कहीं से, उसको भी पढ़ लिया, फिर प्रॉब्लम्स भी कर लिए, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, अब हो रहा है अपन से, तो वी आर हैप्पी. Yes. अभी उसको हेल्प मिलेगी एग्जाम में नहीं मिलेगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. सो दैट इज हाउ वी प्रिपेयर्ड. I know it's not like a concrete way कि this is what you should do, but read books, read good books, which are really good books, and they are very easy to find. You don't have to uh, stick to usual books. Read books which are read by people इन आईआईटीज. और तब तो इसलिए अभी तब तो इंटरनेट भी मेरे घर पे वाज लाइक वेरी बैड. थर्ड ईयर में तो वी गॉट अ कंप्यूटर, यू विल नॉट बिलीव इट. आई वाज लाइक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, एंड थर्ड ईयर में वी गॉट अ कंप्यूटर घर पे. सो इट वाज एट दैट स्टेट. तो रीड गुड बुक्स इज द मोस्ट important lesson. Read it again. You don't get it, it's fine. Read the same chapter 3 times, read the same page 3 times, it is fine. दैट्स नॉट द Yes. पॉइंट कि तुम इतने ही महान होते तो तुमको एग्जाम भी नहीं लिखना पड़ता ना, सॉर्ट ऑफ. तो जस्ट अंडरस्टैंड कि नहीं आता है अपने समझ में, विल डू इट 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स, एंड यू विल गेट इट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एंड देन यू शुड एंजॉय दैट you got it, and then you encourage yourself in that way, and then just push for it. And sir, क्योंकि आपको experience है of working in Amazon, I wanted to ask you if you could share something about that, and also अगर एक आप detailed roadmap share कर सकते, so that the students who are aiming to have a job in Amazon उनको help कर सके. Hmm. Yeah, sure. um, I think um, to get into companies like Amazon, like what really matters is how good you are in your algorithms, right? That is the thing they want to look for. बट दी प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर वहां पर आप चूक गए तो फिर तो आपका कुछ नहीं ही होने वाला है. और अब तो पता नहीं, मेरा तो इंटरव्यू हुआ था बिकॉज आई वाज ऑन कैंपस आईआईटी हैदराबाद से. तो द लास्ट राउंड वाज one problem and in general, but roadmap, if you have to do, start practicing problem solving, and in a sense that, okay, so how would I see a resume, right? If somebody is going to take an interview, and पहली बात तो Yes. ये है कि um, तुम्हारा resume सिलेक्ट होना चाहिए. That is the very first hurdle, right?
कि तुमने अपना रेज्यूमे तो भेज दिया, तुम्हारा रेज्यूमे तुमको इंटरव्यू कॉल ही नहीं आया, तो फिर तो क्या ही कर लोगे तुम, फिर तो बात ही नहीं होगा, तुमको चांस ही नहीं मिला एक्चुअली। तो व्हाट यू कैन डू इन योर रेज्यूमे कि तुमको कॉल आए, है ना? तो यू हैव टू Yes. ओवरऑल, एंड एवरी रेज्यूमे इज डिफरेंट, लाइक यू डोंट हैव टू डू कि भाई हम सब मिलके को एक जैसा ही रेज्यूमे ना, सो देयर इज नो वन थिंग। तो एक तो क्या सेंस होना चाहिए जब कोई तुम्हारा रेज्यूमे देखे कि नो यू वांट, यू आर गुड टेक्निकली। तो कैसे शो करोगे कि यार यू हैव डन द स्कूल प्रोजेक्ट outside or whatever. I never wrote about these projects actually in my resume because mostly it was campus, so I didn't have to do it that much. It was just ki if you can crack their, you know, coding round, the initial screening, then you are in. But if you are applying from outside, when you cannot just do this, then you have to show that you are good technically. And in a sense that you enjoyed doing it, easily you have done these projects, and these projects were not just to get grades for your minor project or something like that. So that is one thing, है ना? तो that should just, कोई पढ़े तुम्हारा रिज्यूमे तो लगना चाहिए कि यार you enjoy computer science, है, you want to do Yes. this job. एक तो वो होना चाहिए तुम्हारे अंदर। तो मेक प्रोजेक्ट्स, गिटहब पे डालो उसको या ऐसे कुछ करो नया कि दैट स्टैंड्स आउट। सेकंड इज बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग मोर प्रोमिनेंटली ना, वही देखेंगे वो तुम्हारा मेजर 2-3 राउंड तो वही होते हैं। तो अब मान लो तुमको लग रहा है, आई एम श्योर यू विल गेट अ कॉल, तुम जेईसी से हो, यू आर अप्लाइंग, बट इफ यू थिंक कि नहीं आएगा ऐसे, तो there are these sites, hacker rank, I don't recall now, but there are these sites, right? hacker rank हो गया, hacker earth और top coder these। Okay, sir. तो उसमें रैंकिंग होती है तुम्हारी, you get some score अपने लिए। तो वन वे इज कि इफ यू विल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा, इफ यू विल गेट गुड स्कोर्स, या फिर छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, है ना? आई हैव नॉट, आई एम टेलिंग यू, आई हैव नॉट डन दिस बिकॉज फॉर मी इट वाज अ बिट डिफरेंट जर्नी, राइट? बट Okay, आई हैव sir. सीन पीपल डूइंग दिस एंड इट वर्क्स। तो अगर तुम लिखोगे अपने रिज्यूमे में ना कि नहीं यार वो हैकर रैंक का एक कंपटीशन था और आई डोंट नो, आई स्कोर्ड दिस मच, वट एवर वे, तो तुम क्या कन्वे कर रहे हो सामने वाले को कि नहीं यू आर गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट इज व्हाट यू हैव टू कन्वे। अभी तुम कैसे उसको क्वांटिफाई करोगे? यू हैव टू क्वांटिफाई, राइट? तुमने बोल दिया मैं थोड़ी मान लूंगा, राइट? तो कैसे क्वांटिफाई करो इज अप टू यू। you do take participate in competitions or just get a score somehow top coder पे and बोलो कि give me a chance। that's what you're basically trying to say सामने वाले को ना कि देखो, Yes. I assure you कि मुझे problem solving आती है, um, this is how I am giving you quantification कि मैंने ये competition में part लिया था और मैंने I have done good somehow, तो मेरा इंटरव्यू लो, इट इज नॉट वेस्ट ऑफ योर टाइम। दैट इज व्हाट, दिस इज द फर्स्ट थिंग, इट्स नॉट वेस्ट ऑफ योर टाइम कि मैं Okay. आऊँ, तुमसे बात करूँ, तुम्हारा इंटरव्यू लूँ और बोले अरे यार क्या फालतू कैंडिडेट था, है ना? इट्स नॉट वेस्ट ऑफ योर टाइम। तो गिव मी दैट चांस, एंड ऑब्वियसली इफ यू आर प्रिपेयरिंग टू गेट दैट चांस तो यू विल ऑल्सो इम्प्रूव योर सेल्फ फॉर इंटरव्यू। डू नॉट जस्ट डू कि मैंने ना ये 50 प्रॉब्लम उठाए और मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ और मैंने कोड लिख दिया, ऐसे ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू बी थोड़ा ग्राउंड अप, है ना? अभी तो तुम लोग सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो, तो अभी से क्या अच्छे से प्रॉपरली एल्गोरिथम्स पढ़ो, समझो एल्गोरिथम्स को कि यार डिवाइड एंड कॉन्कर होता है तो कैसे डिवाइड करते हैं प्रॉब्लम्स को, कि स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं डिवाइड एंड कॉन्कर की, राइट? और वो बुक्स में लिखी होती हैं, लाइक इट्स नोबडी इज टू कम एंड टेल यू, इट्स देयर इन द बुक्स कि सब प्रॉब्लम से निकालना होता है, कि सब प्रॉब्लम स्ट्रक्चर क्या होता है ना? इफ यू विल नो कि बेसिक्स तो यही होता है, और ऑब्वियसली इट्स नॉट कि एक फॉर्मूला है, एंड देन यूज लाइक कि अब मैं Yes. प्रैक्टिस करता हूँ। तो अब मैं प्रैक्टिस कैसे करता हूँ कि यार मैं बेसिक से चालू करूँगा, मुझे लिंक लिस्ट वाले प्रॉब्लम्स आने चाहिए, लीफो फीफो ये सब चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए, फिर मुझे डिवाइड एंड कॉन्कर वाले प्रॉब्लम्स आने चाहिए, मुझे नैपसेक आना चाहिए, मुझे आना चाहिए। तो अब नैपसेक के कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो लिस्ट डाउन, बैठो एक दिन, लाइक टेक नॉट एक दिन, टेक 3 days 4 days,
जस्ट रीड कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे पढ़नी है। तो पहले हाई लेवल पे कर लो कि यार मुझे ना पहले तो ये लिंक लिस्ट वाले प्रॉब्लम्स करने हैं, एरे वाले प्रॉब्लम्स करने पड़ेंगे, फिर मुझे डिवाइड एंड कॉन्कर वाला करना पड़ेगा, फिर मुझे डायनामिक प्रोग्रामिंग, फिर ट्रीज और फिर ग्राफ्स में करूंगा, है ना। फिर अब तुम बोलो Yes. कि अब मैं डिवाइड एंड कॉन्कर वाला अब मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, अगले महीने तक मैं बस डिवाइड एंड कॉन्कर करूंगा, राइट। तो अब यू गो एंड सी कि इसमें किस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर नॉट डूइंग, यू आर नॉट कि मुझे याद थोड़ी कर रहे हो, तुम बोल रहे हो कि मुझे एक एक चीज़ों को टच करना है एंड अंडरस्टैंड कि ये वाले प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होते हैं। तो उसके चार प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, Yes. इसके चार कर लिए, इसके चार कर लिए, तो नाउ यू हैव द आइडिया कि अब मैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स कर लूंगा। तो गो थ्रू दैट फेज, इट विल टेक यू मंथ्स, गो थ्रू दैट। फिर उसके बाद स्टार्ट टेकिंग पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन्स और हैकर एंड और हैकर अर्थ, पिक अ रैंडम प्रॉब्लम। नाउ यू डोंट नो इस प्रॉब्लम में क्या अप्लाई होने वाला है, पिक अ रैंडम, देन जज योर सेल्फ कि यार ये तो हो ही नहीं रहा है यार, बट देन गिव इट अ टाइम, गिव इट आवर्स, इट्स फाइन, लाइक नो, बट दिस इज नॉट द टाइम कि कोई तुमको जज कर रहा है, यू आर जजिंग योर सेल्फ। कि पूरा टाइम दिया मैंने यार, 2 दिन लगा दिए, मुझे तो क्लिक ही नहीं हुआ कि ये तो डिवाइड एंड कनकर का था, मैं तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगा रहा था, मैं तो सोच रहा था एरे से कर लूंगा, हो ही नहीं रहा था मेरे से। तो देन Yes. यू रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ कि वॉट वेंट मिसिंग, and then if you do this cycle na many times, then you will see कि oh, no, there is now it will spiral in terms of improvement. और अगर बेस मिसिंग होगा ना, तो बेस मिसिंग है, तुमने कभी वो प्रोसेस की ही नहीं, तो तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और तुमको लगेगा हो ही नहीं रहा है यार, अपन से तो हो ही नहीं रहा है। ओ अच्छा, कोई मुझे बता देता ना कि ये डिवाइड एंड कनकर का होता। ओ मुझे तो लगता है लोग ना 10,000 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, उनको पता होता है। अरे कैसे कर लेते हैं यार, कोई कैसे कर लेगा 10,000 प्रॉब्लम सॉल्व, ऐसे नहीं होने वाला है। पीपल नो दैट क्योंकि दे हैव डन दिस बेस थिंग, तो दे नो कि ऐसे ही होता है, ये वाले ऐसे प्रॉब्लम देख के ऐसे करना होता है ये। अगर तुम्हारा बेस मिसिंग होगा ना, तो यू विल नेवर बी एबल टू गो बैक एंड पिन पॉइंट कि दिस इज वेयर आई लैग्ड। तो दैट इज हाउ आई वुड डू इट इफ आई वर टू डू इट, when I if I were in your place. Maybe I don't have that much time Sure, now, sir. but if somebody would to have told me this when I needed it the most, I would have done it this way. Ki I have my basic clear, and you have enough time. You know, you are in second, third year. You have enough time to clear your base, and then you keep practicing. At the end of the day, it's practicing, right? To keep practicing. So yeah, two things. Put some things in your resume at the end of the day so that people call you, right? And second is be good at it. Don't sell yourself in a way which you are not. So make sure कि तुम resume में कुछ लिख रहे हो तो make sure कि हाँ मैंने लिखा है यार, मैं problem solving करता हूँ, तो I have really done my homework. तो if you will take my interview, I will try to do my best. Enjoy doing problem solving, so it will all work out fine. And also Sure. just don't be that person, you, like to all of you, right? And जिसको भी बोलो, don't be um, दैट पर्सन हु इज लाइक मुझे तो बस ये ही क्रैक करना है, ये अमेजोन या फिर ये गूगल या ऐसे, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। लाइक यू कैन बी दैट पर्सन, बट यू शुड ऑल्सो बी दैट पर्सन कि मैं इनहेरेंटली तो मैं एक इंजीनियर ही हूँ, तो आई एक्चुअली एंजॉय डूइंग दिस। आई मीन जॉब इज नाउ अ बाय प्रोडक्ट फॉर मी। एंड सर अभी आपने रिसेंटली गूगल डीप माइंड से भी इंटर्नशिप की थी, so if you could share your experience of that. Yeah, so that was more research internship, तो मैं PhD कर रहा हूँ, तो it was related to my research वहाँ पर। Yeah, I think Yes. it was Google is a nice company, and I was mostly in research division. So I there are like so many amazing people there. Uh, just walking past by you, and this is another professor. He is a professor in Columbia, and he has won Okay. numerous awards. He recently won Von Neumann Award, which is like one of the top awards in computer science, like below Nobel Prize. So he's like, and I just he was there, so वो जा रहे थे, फिर मैंने
मैं सोचा उनको बहुत ऐसे हिचकिचाहट में, मैं सोचा कभी तो इनसे बात करूँगा, कभी तो इनसे बात करूँगा। एंड देन आई वाज लाइक, एक दिन ही वाज जस्ट कमिंग, एंड गूगल में ऐसे देयर आर, यू गेट फ्री फूड एंड दे हैव किचन्स, छोटे छोटे किचन होते हैं उनके, Yes, sir. यू कैन गो किचन में, देयर इज सो मच दैट यू कैन ईट, दैट तुम्हारी एपेटाइट ही मर सकती है किसी, लाइक अब मैं खाऊं ही क्या यहाँ True, पे, sir. इट्स लाइक सो मच देयर। तो आई वाज कमिंग वहाँ से, फिर मैंने उनको पूछा कि सर, नॉट सर, दैट्स व्हाट आई डोंट, लाइक क्रिस्टोस, सो कैन आई वुड लाइक टू हैव अ चैट विद यू। तो इसलिए क्या है, श्योर श्योर श्योर, आई एम गोइंग फॉर लंच, डू यू वांट मी टू जॉइन, डू यू वांट टू जॉइन, जस्ट गो, विल हैव लंच साथ में। तो इसलिए किया, श्योर। फिर मैं गया, फिर आई एम जस्ट टॉकिंग, सी जेनरिक, जो भी मेरे मन में आया, लाइक मैं तो सोच ही नहीं रहा था कि यार ये अभी मैं चला जाऊंगा इसके साथ, एंड नाउ सडनली इज लाइक चलो। तो लाइक अरे यार चलो, अभी तो मैं क्या पूछूं इससे, मैं तो बस पूछ रहा था कि कभी मिलेंगे तो मैं कुछ पूछूंगा, प्रिपेयर करके आऊंगा, क्या पूछूंगा, मैं तो प्रिपेयर, इसलिए कि चलो 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 भाई, अब क्या करें मतलब। तो it went like that, but he was like so nice. I just asked him few questions about career, and I said, so he was like, he was explaining whatever he thought. He was very humble, right? So that is one thing. It was a very good experience. Ki there are so many great people. So it was a good experience. Obviously, it was also tough. What motivated you to pursue PhD, sir? Like, आपको inspiration कहाँ से मिली? आपने starting से सोचा था कि you have to pursue PhD, or did you plan it later on? So I got interested. So I was doing my thesis in Hyderabad. My advisor was Dr. Vineet, and then he asked me, so thesis करना है तो या तो मैं तुमको problem दे दूँ, you have to build something, you do it that, or do you want a good, or do you want a research experience? So it's like, what does it mean? So it's like, so I'll give you some research problem or something which I don't know what has to be done. I have some problems, but then we don't know what to do. So then you have to go and figure it out, sort of. कि क्या करना है? What exactly should be the problem you are working on? तो I was like, ठीक है, I actually want a research experience, ताकि I thought it's good, right? मुझे कुछ मैंने I have done many projects where I knew क्या बनाना है. So this is different. This is like I have no idea, sort of. So that is how I started, and I was like, this is so fun, right? You have no idea क्या करना है. तो but it's also bad in a sense कि इसमें things can go wrong. You have no idea what you are doing, so there is no clear output. And people will ask कि तुमने क्या किया था, and तुम बोला यही हुआ. Then it's like कि it's not also good for your profile, right? So but it went that way. I enjoyed that process. I learned machine learning in that, um, in during that thesis. I learned a lot of math, and I enjoyed coming up with new algorithms, and I felt proud that okay, oh, this has nobody has done this before, and this is like a new algorithm now, and this works much better than what people have done in this setting. But then फिर Amazon में I got a job, तो एंड देन आई थॉट अब बहुत हो गया, मतलब मे बी आई शुड, मैं घर पे भी पूछा था, आई थॉट कि मे बी जॉब करता हूँ, फाइनेंशियली भी घर पे हेल्प हो जाएगी. सो आई थॉट कि दिस इज़ द राइट टाइम टू एक्चुअली डू अ जॉब. सो आई मूव्ड जॉब में. इट वाज बेटर फाइनेंशियली फॉर अस, घर पे भी थोड़ा देर वो सपोर्ट आई कुड गिव. फिर ठीक है, आई वाज नॉट एंजॉयिंग अमेजोन दैट मच. लाइक यार ये क्या है, मतलब सॉफ्टवेयर ये लिखते रहो, ये लोग को ये दे देते हैं करने के लिए, क्योंकि आई गॉट दैट टेस्ट थोड़ा सा टू जस्ट एक्सप्लोर मोर. तो लाइक ये तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे ही लग रहा है. फिर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग वापस से. आफ्टर 6 months आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू स्विच. तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, आई स्टार्टेड लर्निंग न्यूअर things, and again it's like takes time, you have to read new things. And then I got into IBM research where I started doing NLP. I got to publish my initial papers वहाँ पर. I got to work with so many researchers, and then at some point of time I thought maybe I should do a PhD, because I'm getting research papers, I'm going to conferences, maybe that's
a good thing, good next thing for me. So it took me time, like it took me years from MTech to deciding to go for a PhD, but that felt right. So that's why I did that. Sir, what is your vision for JEC? So yeah, I don't think I chose JEC. JEC chose me. Yeah, but yeah, vision wise, I think yeah, I feel there are like the students have so much potential, and one thing which I would like to see is that people should do good projects, and our college should be known. Ki, yes, this is what has happened in JC. Like, yeah, I think we should also do more than our coursework, right? Uh, like, Yes, even sir. research wise, I don't know much is happening now. Yeah, kuch. So we should do more than just learning courses. Yeah. Sure, sir. And now I think there is a lot of so many resources are available. So I'm Yes, sir. sure we can do much better than before. So that is how I would see ki these people in JEC are making these cool things. That's what I want to see now. So it was really great interacting with such an esteemed alumnus like you. I feel really very honored, sir. Thank you so much for sharing these experiences. Thanks for inviting.